PPH Lahore. She has done her master's. She has done her master's and living as a housewife right now. She came with a complaint of brownish discharge per vagina for 2 hours, only one episode, and pain lower abdomen for 3 to 4 hours. Brownish discharge per vagina. Brownish discharge. So Does that mean she is started having her periods? No, sir. Sir, her LMP was 22. तो वो पहले आना चाहिए 32 का क्या मतलब? Sir, 22, 22nd of April. Go back previous slide. This information should be there. You see, every piece of information that you give that is relevant, that gives some information, right? So if you start from here, if I tell you that there is a woman who is 35 years old, unmarried, and she presents with a mass lower abdomen, what would you think of that? You would not think of pregnancy as first diagnosis. You might think of, say, fibroid. So that information is relevant. And that is in that order, So if you say that she has come with brownish discharge or bleeding for vagina, might say that she may be having her menstrual periods. The first thing would be that a woman 31 years old, if she presents with bleeding, the first thing that you would want to know is whether it is menstrual bleeding or some other bleeding, right? So first you have to qualify with, say, amenorrhea of so many weeks, or she had her last menstrual period 3 months back, 4 months back, 6 months back, and now she has come with that. Not only that, but you should say that she had amenorrhea of this duration and pregnancy was confirmed. She has a pregnancy of 31 weeks. Right? So because that changes the whole scenario, it may be obstetrical case or gynecological case. उसका फर्क बड़ा बन जाता है. So आप उस तरीके से आप इसको करो. Her last menstrual period was on the 22nd of April and the EDD is 26th of January 24. She presented on the 10th of January with gestational amenorrhea of 37 plus 5 days. Gestational. Gestational नहीं है, it is gestational. Amenorrhea of 37 plus 5 days. ये आप किस तरह से information दे रहे हो? You should have a standard pattern. क्या आप वो दे रहे हो, heading दे रहे हो कि क्या दे रहे हो? Sir, आप ये history दे रहे हो? on her. अब वापस जाओ पिछली slide में. Sir, this is her Case biodata. presentation नहीं है. आप अगर case presentation है तो आप वो उसमें और चीजें हुई. आपने MSc का spelling भी ऐसे गलत है. C small होना चाहिए MSc में. आप housewife came with the complaint of ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न आप सब लोग बनाओ उसके मुताबिक है. जिस तरह पिछला केस प्रॉब्ली उसमें हमने इस किस्म की इतराजात नहीं किए, राइट? सो आप केस प्रेजेंटेशन है कि वो जो आप पहले जो चीजें बताओगे, ये 31 years age, married since September, जो resident of education, occupation, full stop. ये कंप्लेंट्स जो हैं ये आपकी अगली साइड पे भी चली जाती, तो ये यहाँ पे आपकी स्लाइड खत्म होनी चाहिए. अगली जो है दैट्स एन डिफरेंट सेगमेंट. Brownish discharge for vagina, I already told you that it is out of sync. Pain lower abdomen for 3 to 4 hours. समझ रहे हो ना? So इसको आप अगली स्लाइड पे लेके जाओ. आगे चलें जी. और अब ये है कि वो करके तो उसके बाद ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जो है ये आपकी थर्ड स्लाइड होगी. She conceived spontaneously, and that was a planned pregnancy, and confirmed pregnancy by urine for pregnancy test, and also by serum beta HCG. In first, इसका क्या मतलब होगा? sir, confirmation. What is the significance of confirmation of pregnancy by pregnancy test and serum beta HCG? Sir, Because she is presenting you at almost 38 weeks. yes, sir, it's not in the history. नहीं, हिस्ट्री तो है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Sir, मैं what आपको time समझाऊंगा. being मैं आपको समझाऊंगा significance. A woman who comes with the history of 8 weeks amenorrhea or 10 weeks amenorrhea, in her you would say that her pregnancy test was positive 3 weeks, 4 weeks ago, or beta HCG on such and such day was this much. Yes.
right? So that will tell that at what time the pregnancy test became positive, or when was it first identified as positive, and what was the value of beta HCG on such and such date. That will help you calculate the duration of a pregnancy. But now when she comes at 30, almost 38 weeks, there have been so many other things which would have confirmed her duration of pregnancy or the fact that she is pregnant. In early pregnancy with amenorrhea of 8 weeks or 10 weeks, you have to qualify that amenorrhea is because of pregnancy or that is gestational amenorrhea only after you have mentioned or you have uh, referred to pregnancy test or the value of beta HCG, which would say that it was pregnant. Right. Otherwise, 8 weeks amenorrhea it could be secondary amenorrhea due to something. It could be a hypothalamic amenorrhea, right? So when you say that, then you are qualifying that. At this stage, at 38 weeks, you don't need that qualification. So if you are looking at that thing, वो उसका ये superfluous information. On history of first trimester, she took her folic acid and calcium regularly. Her first antenatal visit to the doctor was in कैल्शियम और फॉलिक एसिड तरफ बाद में आएगा. पहले आप उसकी दूसरी first चीज antenatal. किसी भी चीज में एक देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर. ऑर्डर में क्या होता है? बड़ा सिंपल ऑर्डर है. ऑर्डर इज हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट. Folic acid is treatment. History is 9 weeks amenorrhea, antenatal, PV spotting, जो भी उसका हुआ, and at the end वो होगा if she was taking or she had been prescribed folic acid or whatever. Why was she taking calcium in the first trimester? Sir, as a multivitamin or as a Calcium is not a vitamin. मैंने calcium का पूछ रहा हूँ. He said, sir, regularly, sir, just for the sake. There is nothing for just. I'm a difficult examiner. Yes. So, sir, because calcium need is increasing. आपने explain किया था calcium. नहीं, sir. You don't have to justify that. But Simple way calcium out. need is increasing. कैल्शियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं ना देना शुरू कर देते हो, वो तो नहीं ना देते हो, तो यू डोंट हैव टू जस्टिफाई. तो तुम कह दो कि हाँ जी वो ले रही थी, वैसे उसको कब देना चाहिए उसकी बात तो बाद में आती है जब दोगे आप कैल्शियम. ठीक है. और कैल्शियम का बेनिफिट क्या होगा? व्हाट इज इट गिवन फॉर? फीटल इंक्रीज नहीं होती, फीटल नीड होती है, तो फिर माँ की भी होती. और कैल्शियम का एनीवन कैल्शियम व्हाट इज द preventive aspect of calcium administration? Yeah. तुम लोगों को मैं ऐसे ही भेज देता हूँ, मेरा ख्याल है तुम लोगों को. चलो मैंने नहीं भेजा हुआ, मैं बाद में पूछूंगा. कैल्शियम्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया. चलो. Sir, there is history of spotting off and on. On her, There was spotting. there was spotting. Sir, on the 12th week ultrasound, she was ये जो spotting है इसको आप ऐसे ही off and on करना करोगे, you want to interrogate. उसके बारे में पता करोगे कि क्या हुआ. Sir, on 12th week there was low lying percent. That later on moved up. 12th week. Yes. Ultrasound. जब प्रेगनेंसी होती है तो कोरियन कहाँ कहाँ पे होता है? It is all around. So in first trimester, almost all pregnancies would have a low-lying placenta. So there is no low-lying or there is no high-lying because it is all a small cavity where the pregnancy is. And in the first trimester, as a matter of fact, most of the ultrasonologists, they would not specify the site of placenta. So this is for information of all.
that you don't start uh, mentioning the placental localization in first trimester. If you would appreciate some of the reports that you get from the ultrasound department, it would show that the placenta is developing. They always write placenta is developing and they do not say even anteriorly or posteriorly. As a matter of fact, when I, on my own ultrasound, when I do my ultrasound and I see that the placenta is most likely to develop a posterior or anterior wall, that's my impression. And I do take that and I do note that down. And later on confirm with the later reports or later ultrasound that it in fact was developing in that area. But in the first trimester, you don't say because every pregnancy would have a low-lying placenta, so-called low-lying. And what is low-lying placenta, which is in the lower segment? And in the first trimester, there is no lower segment. So you could say that the placenta was covering the os or not, but you don't have to say it here, right? Did you have the ultrasound low-lying placenta? No, sir, This is not that was on the history. Actually, the हिस्ट्री पे question- आ गया तो लेकिन आप उसको मेंशन करोगे उसी तरीके से कि जी ये एक अल्ट्रासाउंड था which mentioned low lying placenta but वो फिर अल्ट्रासाउंड को भी मैं डाउटफुली समझूंगा राइट जो अल्ट्रासाउंड वाला है वो उस तरह से नहीं देता हूँ There was no other significant history like nausea, vomiting, excessive nausea. nausea is nausea is a very significant thing Not so excessive. so वो कोई नहीं है सर rash flu fever what is the significance of that rash It's ऊंचा बोलो मैं इसको बोल रहा हूँ मेरा मुंह दूसरी तरफ है फिर भी पिछले वाले सुन रहे होंगे तुम मेरे पीछे बैठ के बोल रही हो फिर भी मुझे कौन सी इन्फेक्शन कौन सा हर्पीज उठाया तो हर्पीज ही उठाया है मीजल रुबेला की बात करो तो वो हो सकता है वो आजकल दूसरे और कौन सी कौन है चलो लिखो what viral infections are likely to affect the fetal development and cause fetal abnormalities introduced in first trimester. टॉर्च की बात ना ज्यादा करना ये सारे टॉर्च टॉर्च कर देते हैं टॉर्च what does टॉर्च stand for और हाँ साइटोमेगालोवायरस इज इम्पोर्टेंट जिसको हम करते नहीं है उनके ये मत करवाया करो I have in my 40 plus professional ops gynae career, I have never advised anyone to have torch test. वो जो करो तो ये तुम लोगों को फौरन आना चाहिए कि रैश फ्लू फीवर फ्लू का क्या सिग्निफिकेंस है नहीं तो वो वायरल तो है but does it has any significance vis-a-vis pregnancy development of the fetus Sir, just to diagnose के probably she had something previously जो हमें ignore now. Sir, we see that the rubella IgG is usually positive in most of the patients. So what's the significance of that? Because of अगर positive हो तो इसका मतलब है she is immune to German measles. German measles causes significant abnormalities if the patient contracts that in first trimester. So if IgG is negative and IgM is positive, that means that is significant. So most of the population would have either suffered German measles in their childhood, like my generation, and in your generation, most of you would have had German measles shot in your childhood. So that would give you that immunity, which would prevent you from having. But there would be some cases, doubtful cases, in which IgM later on becomes positive. And that is quite an enigma. Now, what to do with that? That IgG is positive, IgM is also positive. How to go about it? The patient is worried. That IgM means that there is a recent infection and how much that infection would have affected the fetus. So we can come to that later on, but this is the significance of that. So when you say rash, flu, fever, you must know what is the significance of those because I'll interrupt you here and I'll ask you about that. And it is
not essential that whatever the case is, for example, this is the case of thrombocytopenia, that ultimately you will be asked about thrombocytopenia may not appear at all in your examination or in your conversation or in your vivos. So we may not even reach the stage of thrombocytopenia where that needs to be discussed or that needs to be treated. Right. Then, again, so first trimester, it has to be restructured your history. Right. आप ये करोगे और करके मुझे बताओगे, दिखाओगे. Sir, she felt fetal movements at 19 weeks. ये मैंने कितनी दफा तुम लोगों को कहा था. ये सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर ही गलत. Quickening felt at 19th week. What does that mean? Sir, to assess her LMP is. That had duration of pregnancy. जी sir. तो 19th week अगर है तो वो कैसे? आपने तो कंफर्म करना है कि ये 19th week ही है उसकी क्विकनिंग से. अगर आप कहोगे कि क्विकनिंग फेल्ट इन सितंबर, सितंबर के 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं, अर्ली सितंबर, मिड सितंबर, एंड सितंबर, एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर से कितने वीक्स बनते हैं उसके? Almost sir 19, 28 के around. एंड ऑफ सितंबर में 10 दिन होते हैं. So ये वाली चीज जो इसको इसकी इस तरह से ना मेंशन किया करो. ये क्विकनिंग फेल्ट कितनी दफा मैंने कहा था. किसी को अगर नहीं समझ आई तो अभी भी समझ लो. इफ समवन इज आयशा समझ आ गई तुम्हें? अगर नहीं किसी को समझ आई तो अभी बात कर लो कि व्हाई आई टेक एक्सेप्शन दिस जो आप वो बोलते हो quickening felt in 19th week, quickening felt in 5th month of pregnancy. That's an absurd statement. Sir, instead of writing that, we should write the month. Sir, मंथ नहीं है. अगर हो तो quickening उसने कब महसूस की थी. Most of the women कल मेरे क्लिनिक में there were 3 patients who were well educated, बड़ी फैशनेबल लड़कियां. उनको मैं एलएमपी पूछ रहा हूँ, उनको एलएमपी नहीं याद आ रहा. अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां. और 1 महीना मतलब ये नहीं है कि वो 6 महीने पहले का, इस महीने का एलएमपी नहीं याद आ रहा, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं याद आ रहा. तो वो बता देगी तुम्हें आगे 38 वीक्स में कि मुझे कोई नहीं हुई थी सितंबर की 12 तारीख को. नहीं ये तो अगर ये ऐसी बात आप करो तो फिर उसमें एक अपने लहजे में एक इस्तेजाबिया वो टोन इस्तेमाल करो. वो क्या होती है इस्तेजाबिया? जुमला इस्तेजाबिया क्या होता है? जिसमें हैरानी का इजहार किया जाए. राइट. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे होता है. व्हाट लाइन नीचे डॉट that you are a little surprised at this. That's Right. I still remember. हाँ कि आप वो अगर ऐसा कर रही है तो because this is unusual. Sir, she was actually relating her everything कि आपके पास कब ये क्या नहीं हिस्ट्रियां ले लेके ना उसको ये बावर करा दिया गया था कि तुम्हें 5वें महीने. मैंने कुछ नहीं कराया था, सर पूछा था. ये पेशेंट तो मेरे पास आई, मेरा लेट थी आई. आपके पास लेट आई थी, वो मैं मेंशन नहीं किया क्योंकि वो सब फिर मेंशन नहीं किया. सर ये आपके पास 19 वीक को आई थी सर, जब ये अल्ट्रासाउंड करवाया था एनामिक स्कैन उसके बाद. एनामिक स्कैन वाज डन इन 20th week in also in September. हाँ फिर उसको इसलिए कैसे कह सकते हो कि she had her normally scan on वो तो डेट भी हो scan available because she had that scan available and she had that and she remembers that she started feeling movements and around that thing. Right. But आजकल scan है और अगर वो scan है so that's a better way of, you see it is changing. We are still sticking to that thing or हम उसको 19th week में या 20th week में हुआ था. That was before the advent or widespread use of ultrasound. Now we have ultrasound and we know that ultrasound gives you with what degree of certainty the duration of pregnancy. Although at this time in mid-trimester, it is not as accurate as it would be in the first trimester, but still. Her previous body continued till 15th week. There was no history of gestational diabetes. Gestational diabetes mellitus, PIH, PV leaking or any ये second trimester इस लिहाज से किसी हद तक ठीक है, but अब मुझे नहीं ये ठीक लग रहा because उसका बड़ा important जो component है इस patient में वो है bleeding spotting. अब इसका मतलब है मैं अब से ये लूंगा कि 15th week और उसके बाद फिर उसको bleeding हुई throughout the pregnancy, right? चलो खैर ये चलो आगे चलो. In third trimester,
she gives history of regular anti-bleeding visits, and there was no history of gestational diabetes, PIH, bleeding, baby leaking. कॉपी के बाद स्पेस दिया करते हैं That's a cover no history of GDM कहीं no history suggestive of suggest. no history of GDM किस तरह से आपको पता चलेगा Sir, OGTT. तो वो आप कहोगे she had her OGTT and that was normal so इसमें आप हिस्ट्री की बात नहीं करोगे स्पेसिफिक पे जाओ और PIH का कि वो उसका the antenatal report does not show any abnormal rise of blood pressure PVB क्या है Sir, bleeding, any history of bleeding, sir, trimester that's तो all. अलग से बोलो बिकॉज सारा तुम्हारी हिस्ट्री पीवी ऊपर क्या लिखा हुआ नो हिस्ट्री ऑफ GDM PIH PVL क्या है Leaking, sir. Huh? Leaking. ये कहाँ से शुरू कर दिया तुम लोगों ने लीकिंग मतलब वो उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में लीकिंग हुई हो और वो आ जाए तुम्हारे पास 38 वीक में हिस्ट्री देने के लिए कि जी मैं आ गई मुझे लीकिंग हुई इज इट आप खुद सोचो कैन योर राइट माइंड वुड यू आस्क समवन ये तुम्हें लीकिंग तो नहीं हुई थी 16th वीक हुई थी पूछोगे पूछते हो डोंट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स नो हिस्ट्री हॉस्पिटल एडमिशन को भी निकालो पीवी लीकिंग को भी निकालो PIH जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आमतौर पे नहीं होता Yes, sir. कब होता है Sir, 24 के बाद. आमतौर पे वो तो अभी वो आपने खुद एग्जामिन किया हुआ है तो उसमें उसको मत उसको घसीटो ना उसको GDM भी कहाँ पे हो नो हिस्ट्री ऑफ GDM PIH इस सारी लाइन को निकालो यहाँ से Sir, her dexa cover. और ये डॉट्स में नहीं है मुझे फिक्रे लिख के बताओगे ठीक है सर, कर टेक्स्ट लिख के बताओ इसका सेकंड ट्राइमेस्टर ठीक है. Sir, dexa cover was not given. डेक्सा मत इस्तेमाल किया करो या इस्तेमाल करना Steroid स्टीरॉइड करो या डेक्सामेथासोन पूरा इस्तेमाल करो या बीटामेथासोन करो जो भी है वो पूरा इस्तेमाल करो और स्टीरॉइड कवर वाज नॉट why would you want steroid cover and why do you mention it और आजकल आगे 36 37 वीक्स पे पेशेंट्स को इतना हमने उनको वो मिस एजुकेट किया पब्लिक को हम लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट कि जी वो बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए नाउ देयर आर स्टडीज व्हिच शो दैट देयर आर इश्यूज विद dexamethasone having been given though it has its advantages of in premature deliveries and in those you should give dexamethasone but not at 36 weeks at 36 weeks it is not required and it definitely has some adverse effects negative effects compared to वो जो रिस्क बेनिफिट रेशियो जो आप देखते हो जब कोई दवाई देते हो तो उसमें वो है इसलिए 36 weeks no and 35 weeks के बाद अगर देना है तो then you should have strong reasons for example but diabetic uncontrolled diabetes वाली pregnancy है उसमें जा रहा है uncontrolled blood sugar levels हैं और उसमें है तो that's why उनमें आप दे सकते हो और डेक्सा कवर ये लफ्ज बोलने में भी इस्तेमाल मत किया करो Steroid. और स्टीरॉइड दिया या नहीं इसमें क्यों आपने 38 वीक्स के पास पेशेंट तुम्हारे पास आई हुई है अगर तुम वो 32 वीक्स के ऊपर हो तब तो आप बात करो इसकी कि उसके साथ प्रीमेच्योर लेबर पेन्स या कुछ और हो या खाम में इसके बात करके हमारा अपना और सबका वक्त जाया करा रहे हो ठीक है ना जी. हाँ। Her fatal moment. इंजेक्टेबल आयरन की हिस्ट्री क्यों ले रहे हो तुम Sir, in case any. नहीं का मतलब क्या है ये इंजेक्टेबल आयरन आप इतनी रूटीन होगी कि हर किसी को ही वो हम करेंगे हम देते हैं काफी देते हैं बट क्यों इसका ये लिखना जरूरी है इसकी क्या रिलेवेंस है क्या उसका एनीमिया था या ओरल आयरन कम आपने ये कहीं नहीं लिखा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में कि वो उसने क्या क्या ले रही थी वो और पहले ट्राइमेस्टर में आपने कैल्शियम लिख दिया सेकंड ट्राइमेस्टर में जब आयरन और कैल्शियम या एस्प्रिन वो लेनी चाहिए क्या वो ली कि नहीं उसने वो आपने नहीं मेंशन किया एस्प्रिन की नहीं मैं आयरन की बात कर रहा हूँ आयरन कंटिन्यू किया था बट ऑफन पेज में रेगुलर यूज किया आपने वहां लिखा नहीं है ना यहाँ पे आपने हिस्ट्री ऑफ नो हिस्ट्री ऑफ इंजेक्टेबल आयरन लिखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ जो होना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में वो आप लिखोगे हिस्ट्री ऑफ रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स where she was reassured that the pregnancy was proceeding uneventfully normally the fetal growth was according to the norms
and she had her growth scan also वगैरह वगैरह, वो उसकी डिटेल बताओ। ये जो नेगेटिव है PVL और PVB टाइप चीजें, इनको इस तरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता आप खास तौर पे इसमें जो बोलोगे कि इनमें इस दौरान में after 15th week she again that needs to be emphasized that she did not have any episode of vaginal bleeding, वो relevant बनता है अगर हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात कर रहे हैं, राइट। और इसका पहला वाला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से प्रॉपर ब्लीडिंग था, कुछ और हो जाती है। On obstetrical history. ये तरीका नहीं है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का, आइंदा से मुझे वो टेबल बना के दिखाया करोगे आप। Okay. She had previously her cesarean section at Fulton in private hospital on 11th of June 2019 due to failed problems of labor. She has a baby boy that is alive and healthy. Previous pregnancy. बॉय का पेट कितना था? The baby. क्यों? She is an educated woman, she has a record with her and you should have big weight. So her pregnancy, previous pregnancy was uneventful. Previous pregnancy ऊपर लिखोगे, delivery बाद में लिखोगे। She had her cesarean section in front और पहले pregnancy की बात करोगे, फिर complications in labor करोगे, complications in delivery करोगे, फिर protruding की बात करोगे, फिर बच्चे का status बताओगे। वो जो टेबल इसीलिए है उसके मुताबिक आपको ऑर्डर ही उस तरह से बताने को पड़ेगा। अब कॉम्प्लिकेशन जो है उसको हुई जी सर, complication she had post cesarean section went into postpartum hemorrhage. She was taken in operation theater and managed accordingly. आगे अगेन PPH के बाद आपने स्पेस देके कॉमा डाला हुआ है, कॉमा पहले आएगा स्पेस बाद में आएगा, देख रहे हो ना। जी सर। She went into PPH, was taken into OT and managed at 6 units of blood transfusion. Sir, management, she was telling. एंड वहां पे कौन डाला हुआ है आपने, और इस तरह का एंड आइंदा से अच्छी तरह से एडिट करके लाया करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यू शुड नॉट ब्रिंग अ स्लॉपी जॉब। On the gynecological history, her age of menarche was 13 years. Menstrual cycle was regular, 4 to 5 days she was menstruating every month with average flow. There was no history of contraception or any pap smear. यहाँ पे एक चीज और होती है, एनी एसोसिएटेड सिम्टम, अगर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात हो रही हो तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ कोई डिस्चार्ज, कोई पेन, डिस्कम्फर्ट, वो वाला वो होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 5 28 days रेगुलर बाद में आएगा with average flow and no associated symptoms, or if there is first day dysmenorrhea or discomfort or premenstrual or postmenstrual spotting, ये मुख्तलिफ किस्म की जो उसमें चीजें हो सकती। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 5 by 28 days रेगुलर with average flow. Her medical and on medical history, there was no history of diabetes mellitus, hypertension, bleeding of gums or nosebleed or delayed wound healing. But she had previous cesarean section. Family history, mother is hypertensive. There is no history of twins or anomalous babies, blood transfusion or carcinoma in family. कार्सिनोमा का जिक्र क्यों करते हो? That's the family history. हाँ? Information के लिए इस इन्फॉर्मेशन का क्या ताल्लुक हुआ इस केस के साथ? इस केस के साथ तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप? कौन सा कार्सिनोमा आप सस्पेक्ट करते हो? नहीं फिर भी कार्सिनोमा क्यों, सार्कोमा क्यों नहीं? जब आप एक्स्ट्रा चीजें करोगे तो फिर उस तरह से आएगा, राइट? डोंट ट्राई टू बी ऑल एनकम्पसिंग, उस तरह से नहीं बात। ये जो हेडिंग होता है उसका एम्फेसिस और होता है, और जो उसके नीचे चीज होती है उसको थोड़ा टैप करके लगाते हैं, राइट? उसको उसी तरह एक ही लाइन में नहीं सारे बुलेट कर देते, सिर्फ रंग चेंज करना काफी नहीं, उसको टैप करके। Her drug allergy, she had no drug allergy. Her sleep appetite was normal. She's non-smoker and non-alcoholic. She and belongs to an upper middle class family.
On examination, patient is cooperative, young lady with the BMI of 26.7, sitting comfortably on couch, responding to my commands. On general physical examination, her vitals are pulse is 80 वर जब आपने लिया है pulse is 82 per minute, regular ठीक है, आगे। volume, blood pressure 120/70, afebrile with respiratory rate, low with रेस्पिरेटरी रेट कितना था सर ये पेशेंट बाद में मेरे सर उसके वाइटल तो लिखा अगर नहीं अगर आपने लिखा है तो फिर कह दो कि गिना था इससे जो मैं था उधर वो जिस तक तुमने हिस्ट्री ली क्योंकि मुझे पता कि नहीं लिया जाता तो इसलिए टेम्परेचर तुमने नहीं लिया ब्लड प्रेशर भी उस वक्त तुमने नहीं सर लिया वाइटल स्टाफ ने लिए थे जब हाँ मेंशन थे चलो no visible failure, cyanosis, jaundice, clubbing or failure, erythema, Peter or sacral edema was seen. Thyroid was not enlarged and all accessible lymph nodes were not palpable. Both breast. no accessible lymph nodes were there all accessible Okay, no access. No. No lymph nodes that were not palpable. Both breasts are bilaterally symmetrical with inverted nipples and normal aluta. No mass palpable in all four bodies. no mass palpable in any of the bodies On the systemic examination, she was having bilateral normal vesicular breathing with no diatonic sounds and the normal first and second heart sounds with no heart sound. ये सुना था Patient was fine. अब नहीं सुना था तुमने तो कह दिया तुमने हाँ तो कम मैं उसको मान This is वो मुझे पता है कि तुमने नहीं सुना लेकिन ये चीज को ऐड करो ये एक अपना जो मेथोडोलॉजी बनाओ उसमें ऐड कर लो कि आपने जो भी है झूठा सच्चा आपने टूटी लगा के तो कानों में लगा के जरूर और सुन लेने का फायदा हो क्योंकि वो सुन लेना जो है उसमें आपके 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट फॉर सेक ऑफ फॉरनेस यू नीड टू डू दिस कि आप उसको वो भी देखो 2 जगह पे दूसरी तरफ स्टेथोस्कोप लगाओ और सांस दिलवाओ और इसी तरह से सामने आप कम से कम जो ये कौन सा मुझे तो नाम भी नहीं आता तुम लोगों को पता होना चाहिए हाँ वो जो है वहां पे आप हार्ट को ऑस्कलटेट जरूर करो ये ऐड कर लो आज के बाद आपने हर पेशेंट को जिसको आप एग्जामिन कर लो और करो ये डेली आपने एक हिस्ट्री लेनी ये तुम लोगों को तो काम ही को इतना ज्यादा नहीं होता ये लेकिन एक हिस्ट्री लेके उसको लिखो उसका एक पूरा टेबल बनाओ और उसका लिखो और उसकी प्रैक्टिस करो हालांकि ये आजकल अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज़ यू आर गोइंग टू inculcate it in your reflexes that you are going to take history and manage patients like that so that general physical examination systemic examination and there are only a few things that you need to do so that when you approach the patient the way you place your hands wherever you do that it would show that you are familiar with what should be done and that should come naturally not thinking acha ab maine एब्डोमेन को ऊपर से देखना है नीचे से देखना है अपना हाथ में ऐसे रखना है ऐसे रखना है या ऐसे रखना है या ऐसे रखना है ये ताकि सोचना ना पड़े वहाँ एब्डोमेन आपने एक्सपोज कर आपको पता होना चाहिए कि उसको कवर कैसे करना है एक्सपोज कैसे करना है कहाँ से देखना है कहाँ से मैयर करना है तो वो जब आप जो चीज कर रहे हो उसके साथ ही पता लगना चाहिए क्या वो जिस तरह से मैं तुम लोगों को बताता था कि जब इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए वो इंस्ट्रूमेंट्स की चॉइस होती थी ना कि आपने आइडेंटिफाई करना डिस्क्राइब कर अब मैं कहता हूँ ये इंस्ट्रूमेंट है मैं वो ये नहीं होता था कि आपको जो भी आता मैं कहता था पिक अप एनी इंस्ट्रूमेंट वो जिस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट को उठा के वो पकड़ता है बंदा उसी से पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या पता है राइट और उसके साथ अगर फिर हो कि हाँ इसका क्या इस्तेमाल है कहाँ पे करते हो क्या कॉम्प्लिकेट वगैरह वगैरह लेकिन वो पता ही अगर आप उल्टा सीधा मैंने तुम लोगों को फोर्सेप्स के तौर पे बताया था ना कि आप जिस तरह से फोर्सेप्स को पकड़ते हो अगर आप उसका वो जो फेनेस्ट्रेशन उसकी है उसकी पहले उसमें अगर उंगली डाल के उसको पकड़ लो तो वो मतलब पता चल जाएगा कि आपने फोर्सेप्स कितनी देखी है ये की है सो वो उसके साथ वो पकड़ो ठीक अब ये डस्टर है अगर मैं इसको ये तो है दोनों साइड से एक जैसा ही है
अगर जो एक वाला डस्टर हो, एक साइड हो, तो अगर आप उसी को अपने हाथ की तरफ करोगे तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। ये अच्छा है वैसे इसके साथ, you can't hold it wrongly. On abdominal examination, on inspection, the program abdomen with central inverted umbilicus. There was transverse scar of a previous cesarean section in the lower abdomen and striae gravidarum were visible. अब तुम्हारा ये abdominal examination में ये कहाँ चलेगी? वो abdominal examination एक ही जगह पे होना चाहिए। On palpation, ये हर दफा ना मुझे ये चीजें पॉइंट आउट करना पड़े, ये आप लोग देखा करो, इसको करो। अब ये केस प्रेजेंटेशन का फायदा ये कम से कम होना शुरू हुआ। पहले जब हमने 87 में हमने पहला कोर्स किया था डॉक्टर आशिफ और मैं, और 80 जो आजकल के प्रोफेसर रिटायर हो गए हैं वो उन्होंने ये कोर्स अटेंड। डॉक्टर समिया का नाम आपने सुना होगा, रिजवाना चौधरी हैं, पेशावर से लेके कराची तक के लोग उसमें आते थे और होते थे 10-12 कैंडिडेट होते थे क्योंकि 1982 में सारे एफसीपीएस जो थे ना, जो टोटल अपीयर हुए थे वो 12 एफसीपीएस थे टोटल, हर स्पेशलिटी को मिला के। तो वो मतलब इतना नंबर कम होता था। जो 87 में हमने शुरू किया उसमें 8-10 कैंडिडेट होते। अब वो कैंडिडेट्स जो हैं उनका हम 4 हफ्ते का कोर्स होता था और 3 हफ्ते उसमें जो होते थे वो सिर्फ हिस्ट्री पे लगता। वो आजकल के बड़े प्रोफेसर जो हैं ये मैंने कुछ नाम ऐसे ही ले दिए, लेकिन वो प्रोफेसरों के साथ हमारा 3 हफ्ते का टाइम जो था वो सिर्फ उनकी हिस्ट्री करेक्ट करने भी लग जाता। बाकी चीज जो है वो बाद में आती थी, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और उसके बाद डिस्कशन केस के साथ होना क्या चाहिए, किस तरह से हम जाएंगे, राइट। So this is something which forms the basis of all that. I was very pleased to hear some of those जो हमारा पिछला वो जो एक वो सैफोक वाला हमने किया था उसके ऊपर जो भी केस था, किस चीज का था वो डायबिटीज का, कि उसमें जो फीडबैक आ रही थी जिस तरीके से लोग उसको कर रहे थे क्रिटिसाइज, कि वो इसलिए है कि अगर आपका बेसिस जो है उस चीज के लिए वो स्ट्रांग है और वो पक्का है तो फिर आप उसके मुताबिक चलते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये जो चीज है इसको करना जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलें। लॉन्गिट्यूडिनल कफाल है, ठीक है। ये देखो एक मिनट है, 2.9 is too precise, वही 1.5 सेंटीमीटर की सर्विस तुम बता रहे हो मुझे, हैं 2.9 only I am allowed to make that kind of assessment कि बच्चा डिलीवर कर लो तो मैं कहूँ हाँ 2.9 का है। You don't do that. You would say either it's between 2.5 to 3 kilogram. You give that range. Even I can't, मतलब वो abdominal palpation के साथ how can you say कि ये 3 किलोग्राम का है या 2.9, 3 किलोग्राम तो कह सकते 2.98 कर दो इसको, वो जैसे वो फील्ड वाले करते हैं 2.98। हाँ मेरे हाथों में स्केल लगी हुई है, चिप लगाई हुई है आपको। ओके No scar damage and on auscultation fever heart rate were 135 beats per minute. So ये भी रेंज में करना ही होता है वो जो सब स्टेप्स नहीं, वो जिस वक्त आपने देखा है ऑस्कल्टेशन की है तो वो आप उस तरह से लिखोगे। और सर टू असेस द ये पर विजाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, विजाइनल एग्जामिनेशन। बिशप का बी बड़ा होना चाहिए कैपिटल। सर ऑस वाज वन फिगर तो ये क्यों किया तुमने? सर बिशप असेस करने के लिए क्योंकि पेशेंट कह रही थी कि अगर नॉर्मल मेरा हो जाए और व्हाट वाज इंडिकेशन, ये क्या था? So she was saying that I am having lower abdominal pain and on demand भी किया तो फिर बिशप स्कोर नहीं कर। What is the significance of bishop score? When do you do that? sir assess that To assess the जो pelvis बिशप स्कोर में pelvic cavity का तो जिक्र ही कोई नहीं है। sir वो to see that if she can we can induce her for going to the You assess the probable success rate of induction, right? Probability of success, because the higher the bishop score, the greater likelihood of her going into labor with induction, or greater chances of this induction to be successful.
तो वो उसके लिए करते हो। अदरवाइज अगर आप करो तो आप उसको बिशप स्कोर मत कहा करो। यहाँ पे तुम लोगों ने और नई रवायत शुरू कर दी है, खबरदार आइंदा से मैंने कभी विशेष सुना कि इसका बिशप स्कोर है। इंडक्शन वाला है, यस डू टेल मी कि बिफोर इंडक्शन के हर बिशप स्कोर वाज 3 2 0 और 6, बट लेकिन जो वैसे pelvic एग्जामिनेशन करते हो, once you have started that, then don't refer that to a bishop score। और फिर डोंट से कि सेकंड के जी सेकंड इंडक्शन कर दी, सेकंड इंडक्शन नहीं की, सेकंड डोज दी है। सेकंड इंडक्शन मींस कि पहली इंडक्शन फेल हो गई थी, आपने एक दिन का इंटरवल किया है, नाउ यू आर स्टार्टिंग सेकंड। में कितनी दफा तुम लोगों को कहा, उसके बावजूद ऐसा वो इसके लिए सेकंड डोज ऑफ फर्स्ट इंडक्शन। और उसी तरह से आप पेल्विक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग बताओ। तुम्हारे कॉमे मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, सारे कॉमे गलत जगह पे, तुम लोगों को इतना नहीं पता चलता कि कॉमा कहाँ होना चाहिए। चलो, vaginal examination also is the one finger with the ये कितना बिशप स्कोर बना, 2 मेम्ब्रेन इंटैक्ट। बिशप स्कोर में लिखो मेम्ब्रेन्स के साथ उसका क्या ताल्लुक होता है? as she was a book patient, so her investigations were already done. Most of the investigations were done. That is blood group, which was B positive. On her CBC, her hemoglobin was 13.2, TSC 13.4, and her platelets dropped down in 1 month from 1,08,000 to 1 lakh नहीं को 108,000 100 to 92,000. 92,000। Her peripheral smear was being done when her platelets dropped to 1. ये 10⁻9 पर लीटर, ये क्या बताया आप? हैं? ये क्या है? नहीं, व्हाट इज दैट वैल्यू? इसका सिग्निफिकेंस मुझे बताओगे? जो आपने लिखा हुआ है 92 into 92, फिर स्पेस है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है विद 10⁻9 और पर लीटर। जैसे स्लाइड्स में क्यूबिक इन्वेस्टिगेशन में व्हाट डज इट मीन? मुझे नहीं पता इसका। अगर आपको नहीं पता तो आपने ऐसा क्यों लिखा? आप सिंपली 92,000 लिख देते, बच जाते। 92,000 प्लेटलेट्स पर ml पर लीटर, क्या किस तरह से? सर अगर पर लीटर में निकालेंगे तो सर इसकी रेस टू पावर बढ़ानी पड़ती है। कितनी बढ़ानी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है कितनी? नहीं है ना, इसको जो आप वैल्यू लिखो आपको उसकी इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। उसको सिंपल लिख देते 92,000, 108,000 से वो 92,000 पे आ गया। पर क्यूबिक ml, पर ml आता है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है जो ml होता है, तो उस पे कर रहे हैं। जब लीटर्स में जाएगा तो फिर चेंज हो तो जाएगा। आप लीटर्स पे लिख रहे हो तो फिर उसको लीटर्स पे क्यों लिख रहे हो? आप सिंपल उसको जो लिखो जिसमें लिखा हुआ आता है। फिर इसके सिग्निफिकेंस का भी मुझे बताना, मुझे नहीं पता जो तुमने लिखा हुआ। 92,000 लिखते हैं तो 10⁻6 हो जाता है। क्या? अगर 92,000 अगर 30 और लगाएंगे तो फिर 10⁻6 होगा। तो आपका जो लीटर में जाएगा दोबारा से बोलना। यूनिट है ना, पर प्लेटेट से इस अगर हम 92,000 लिखते हैं फिर और ऐड करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, या 6 क्या हो जाएगा? 10⁻6 अगर हम 3 zeros यहाँ 92 के साथ ऐड कर देंगे 92,000 पड़ेंगे फिर 10⁻6 हो जाएगा। फिर इसकी यूनिट सही है, मुझे याद नहीं है कि कितना वो याद करके बोलना ना। फिर 6 का मतलब है 6 0 तो नहीं आएंगे 92,000। जब 92,000 अगर लिखना हो तो कितने जीरो आएंगे? यहाँ 92 के साथ 3 zero लगते हैं और 10⁻6 हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आई, खैर मुझे समझाना बाद में। चलो अब आगे चलो। peripheral smear showed normosity normal chromium. ये इसको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट ये। चलो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट का पेरिफेरल स्मीयर से तो नहीं पता चला, वो तो काउंट से ही पता चल गया। Sir, her थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की डेफिनेशन क्या है? sir less than 1 100,000 वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। सही है इसकी टेक्निकल। अच्छा चलो आगे। sir बाकी हो गया, चलो आगे चलें। कोagulation प्रोफाइल क्या?
अब कोएगुलेशन प्रोफाइल का हेडिंग तुमने यहाँ दिया हुआ है, हाँ? Sir, also not. कहाँ पे लिखा है? Sir, मेरे बोल रहे हैं. अच्छा, अभी टाइम नहीं हो गया क्या हो गया है? चलिए समरी बोल. Sir, she is Mrs. SF, 31 years of age, gravida 2 para 1+0 with previous one cesarean now at 37, presented with 37 plus 5 weeks, with history of postpartum hemorrhage in the previous pregnancy, and now she has gestational thrombocytopenia. Gestational thrombocytopenia in this pregnancy. ये and एक ही तो उसमें आई है, एक उसमें जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो होता है कि जब शुरू से ही डायग्नोज आ रहा हो. सर दोनों में सेम रीडिंग है. भी करवाया है ना आगे. ठीक है सर, तो फिर उसकी नहीं है. आपकी अभी है, पहले का जो पहले की रिपोर्ट्स हैं उसकी सर, शी हैड रेगुलर एंटीनेटल. तो पहले कितना आ रहा सर था? 158 थी शुरू वाली, फिर 108 थी, फिर 108 थी और फिर 90. तो अब लास्ट में इस तरह से हुआ ना. So we wouldn't really say that she has suffered from thrombocytopenia throughout her pregnancy. It was on the lower side. 158 तो बिल्कुल normal range में आ गया, तो 150 lower range है, 158 उसमें आ गया है. उसके बाद अब उसका वो उस तरह से हुआ, तो इसलिए अब उसको कहो कि it has fallen below 100,000 only now. ठीक है. I wasn't very convinced about giving her a mega unit of platelets, but considering her previous PPH history, the anesthesia people were quite right in asking for that. ठीक है. सर ये फिर इसको भी लिखिए, improve करो. डाउट इसको सारा improve सर करो. ये हमने लिखा है सर, इस पे भी डाउट. Brownish baby discharge, lower abdominal pain 38 पे हर किसी को हो. कौन सी ऐसी? किस तरह मेंशन करेंगे? तो बस आप कहोगे कि she presenting the lower ये brownish baby discharge के साथ. और अगर आप लिखना चाहते हो pain, you must make a distinction between pain and discomfort. Pain is something which has to be taken and it has to be assessed, and discomfort is something that is to be reassured. You do look for that Right, sir. on examination, Right, sir. but lower abdominal discomfort, hardly a woman would not experience that discomfort at the later stages of pregnancy. ठीक है. डॉक्टर साहब आए. On आगे चलें. बताऊंगा नहीं, इसको. ओके कंप्लीट कर लें. चलें ये मैनेजमेंट प्लान बात कर रहे हैं. counseling of the patient was done regarding her condition, telling her about local. When you say counseling of patient regarding her condition, you don't get away with it just like that. It is not enough. You have to tell specifically 2 or 3 things that you will tell the woman or the patient. Woman of people or woman में आ गए हम. A counseling of patient regarding condition. So वो आपने counseling कर दी कि the counseling of the patient will be carried out on this line. On the necessity of the cesarean, repeat cesarean section, on the chances of her VBAC if she wants that, and on the status of her platelet count and what needs to be done about that, and Any the need complication that we have after. complications and the need for blood transfusions and availability of fresh blood. Right. So the patient will be counseled about her current status of pregnancy, which is so far normal except for low platelet count. That's number 1. That she would need, there is a possibility of need of blood transfusions for which cross-matched fresh blood should be available. And she also would need a mega unit, which is that she would require transfusion of platelets, which is called a mega unit, right? And thirdly, how far are we going to give her the chance for VBAC? वो होना है नहीं होना, right? And वो फिर उसके बारे में बाकी जो आता है. लेकिन ये जो counseling जब आप बता रहे हो, then you must tell the points that you need to specifically brief the patient about those. चलिए जी आपने लिखी है admission. The plan of delivery, she was counseled that her vision was poor and previously cesarean section was done. Also the risk of going into PPH.
again, so her elective cesarean was done. Involving the multidisciplinary team, that is anesthesia department and neonatal department, her for a pre-op assessment and post-op care of mother and baby. Arrangement of the blood and platelets before surgery, giving her antibiotic cover, Which informed is the routine. Yeah. Informed consent to be to include any possible intervention. Keeping her under observation for fetal-maternal monitoring, that is her vitals and Till her delivery or cesarean section. in her delivery or cesareans, and watch for puerperal contractions or any scar. ठीक. So this is what we did to her. That is her elective cesarean section was performed. And Mega unit of platelets was given. G. Sir, in a live baby girl of weight 2.98 8 kg and Aplar score 8/10 and 9/10 was delivered cephalic with clear liquor, followed by complete delivery of placenta and membrane. Some uterine atony or moderate bleeding was observed during cesarean, and decision to apply the baleen suture was made. Post-operatively, patient was remained stable. Her monitoring was done with vitals, input-output record, uterine contractions, BB bleeding, and breastfeeding care with good care of her pain management. On repeat of her complete blood count, her hemoglobin was 11.5 gram per deciliter and platelet was 135,000. 1,35,000. She was discharged with her baby on second post-operative day with detailed counseling and plan of follow-up. And she is made unable to recovery. And I would add a few things about this particular patient. She is not a typical case of gestational thrombocytopenia, and her previous history, it did not mention any. There wasn't any reference about the platelet counts in her previous pregnancy or around the time of her cesarean section. But there was definite history of postpartum hemorrhage. Most likely that was because of uterine atony, with the number of blood transfusions that she was given, and but she was managed by very senior OBG consultants in a private hospital in her previous pregnancy. So keeping that in mind, we were more careful about the preparation of the patient so far as cesarean section was concerned to meet any exigency so far as postpartum hemorrhage is concerned. And therefore, we had blood, cross-matched blood available, and she was given a mega unit of platelets. Although 98 or 90,000 or 92,000 platelet count, you could go ahead and do a cesarean section. Generally, you don't need that, but that was a safety measure that we carried out. And B-link suture also was applied prophylactically. The uterus was a little soft, but it wasn't. It was more or less what we normally find the uterus to be. So we applied B-link suture prophylactically so that she doesn't go into PPH. And fortunately, she made straightforward post-operative recovery. So we'll take up gestational thrombocytopenia in one of the next sessions. Thank you, sir. Thank you. Thank you. ये एक मिनट पर ये मैंने 2 स्लाइडें देखी. अगर आप इस पे गौर करें दोनों स्लाइडों पे जो अभी प्रेजेंट हुई, आपकी सारी जो बोलना है, आपने जो बोलना है वो इन 2 स्लाइडों पे लिखा हुआ है. सिर्फ आपको गौर करना चाहिए. उन्होंने तो हाईलाइट भी कर दिया रेड में. आप अपनी टोटल डिस्कशन इन 2 स्लाइडों के इर्द गिर्द घुमाइए. पहली स्लाइड में 3 चीजें हैं कि प्रीवियस पीपीएच हुआ था, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ और अब लोअर एब्डोमिनल पेन और ब्रोनल डिस्चार्ज. इन 3 चीजों पे गौर कीजिए थ्रू आउट. फिर जब मैनेजमेंट आई उसमें फिर हुआ कि उसको पीपीएच हो गया. सेक्शन इलेक्टिव लफ्ज है, इलेक्टिव सेक्शन. तो इट मींस शी वाज डूइंग वेल. प्लान सेक्शन हुआ. प्लान सेक्शन में फिर उसको पीपीएच हुआ. वो सारा आपकी डिस्कशन इस पीपीएच पे होगी. और उसके बाद
कि जी उसको आपने प्रोफिलैक्टिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डायग्नोज करते हुए उसको प्लेटलेट भी दे दिए, पर फर्क यार उन्होंने दूसरे दिन ही घर भेजता। हैं? She was discharged home on second day. हाँ ये थोड़ा सा अर्ली नहीं हो गया? वहाँ एक्चुअली नहीं, वो दूसरे जो रूटीन में 48 आवर्स के बाद ही, लेकिन वो चूंकि वी कीप इन टच विद द पेशेंट ऑन टेलीफोन एंड एडवाइस देम 48 आवर्स के बाद भेज देते हैं, बिकॉज नहीं, लेकिन 48 आवर्स उनके लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यहाँ पे तो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। ना यू आर राइट कि उसको रखना चाहिए वो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ऐसे पेशेंट को जिसका दूसरा सेक्शन हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, PPH और ये सारा कुछ है, तो वो रूटीन में 48 आवर्स। आई एग्री विद यू, आई एग्री। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।